solve some problems on what we have learned so far. I mean, so far in this chapter, we have seen different temperature scales. Example 7.1, average room temperature on a normal day. Today is not normal day, of course. आज 27 डिग्री नहीं है, थोड़ा ठंडा है, मे बी. तो एवरेज रूम टेम्परेचर ऑन अ नॉर्मल डे 27 डिग्री. व्हाट इज द रूम टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट? वेरी सिंपल. व्हाट इज गिवन टू यू इज टीसी. कितना? 27 डिग्री. व्हाट यू सपोज टू फाइंड इज टीएफ. एंड फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए. TF minus 32 upon 180 equal to TC by 100. Then simple बहुत सिंपल क्वेश्चन है. TF minus 32 upon 180 equal to TC कितना है? 27 by 100. You know this is 5, this is 9. Yes. तो TF इक्वल माइनस 32 इक्वल टू 9 वहां शिफ्ट कर दो. 9 by 5 into 27. Then TF इक्वल टू 9 by 5 into 27 plus 32. अब सॉल्व तो आपको करना है, कैलकुलेशन आप करोगे, मैंने करके रखे हैं. तो आई विल डायरेक्टली टेल यू व्हाट इज द आंसर दैट आई एम गेटिंग. आई एम गेटिंग दिस टू बी, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज देयर इज लेस टाइम अवेलेबल, तो ये कैलकुलेशन में हम टाइम नहीं डालेंगे. इट इज टर्निंग आउट टू बी 80.6. वैसे मैं बता देता हूँ. एनीवेज आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस. सिंपल है. एक काम करो, ये नीचे 5 दिखता है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2. व्हाई? इट बिकम्स 18 by 10. मतलब इन शॉर्ट इसको कैंसिल ही नहीं करना था, इन शॉर्ट. तो दिस इज 18 by 10, राइट? इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस तो ये भी चलेगा, आपके ऊपर है. क्योंकि इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. 32 5 160, 27 9 मतलब 270 में से 27 माइनस करना है. 243 प्लस बाय 5. दिस इज 403 403. दिस इज 403 बाय 5. अब मल्टीप्लाई कर लो 2 से. मल्टीप्लाई डिवाइड 806 बाय 10 मतलब 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. So done. This is how you are supposed to find out temperature in Fahrenheit. Normal human body temperature in Fahrenheit is 98.4 degree Fahrenheit. What is the body temperature in degree Celsius? तो जब हमको बुखार आता है, फिर हम बोलते हैं 102 का बुखार है, 103 का बुखार है, मतलब यू आर मेजरिंग इन Fahrenheit. तो you need to know what is normal body temperature in degree Celsius. So this time TF is given to you, which is 98.4 degree Fahrenheit, and this time you are supposed to find out what is TC, and of course formula is the same. Good. Then सिर्फ यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है. इजी है ये तो और भी इजी है, बिकॉज TC विल बी इक्वल टू, सिर्फ 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट TF minus 32 by 180 into 100. You know this is of course 5, this is 9, and you of course know TF is 98.4 minus 32, ये 9 और यहाँ पे ये 5, this is 66.4 upon 9 into 5. तो ये अभी आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा. यू सपोज टू डू इट इफ यू नो व्हाट इज 5/9. यू नो व्हाट इज 5/9? नहीं? हाँ, तो फिर अभी पहले वो करके रखो. 5/9 बहुत जगह पे कैलकुलेशंस में काम में आता है. तो 5/9 की वैल्यू यू शुड नो एनी टाइम. 5/9 इज 0.5. 5/10 is 0.5. मैं एग्जैक्ट वैल्यू बोल रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज हियर यू नीड एग्जैक्ट वैल्यू. So anyways, वो आप खुद करोगे calculations. You have to do it. Now the final answer that I am getting is 36.89 degrees. This is 36.89 degree Celsius. Next question.
The length of a mercury column in a mercury in glass thermometer is 25 mm at ice point and 180 mm at steam point. What is the temperature when the length is 60 mm? तो आपको याद होगा, if you remember, हमने एक फॉर्मूला देखा था T equal to 100 PT minus P1 upon P2 minus P1, where P stands for thermometric property. For first type of thermometer, मतलब liquid in glass, mercury in glass, this P is volume, क्योंकि वहां पे change in volume measures what is temperature. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपने थर्मोमीटर देखा होगा अच्छे से, तो थर्मोमीटर में वॉल्यूम की जगह पे आप मेजर करते हो लेंथ, क्योंकि what happens is this, कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर जो कॉलम है मर्क्यूरी का, इट राइजेस, एंड देन व्हाट यू मेजर इज एक्चुअली लेंथ. तो हमारे इस क्वेश्चन में हमको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम की जगह पे क्या दिया है, लेंथ. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या दिया है. तो नंबर 1, द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम is 25 mm at ice point, मतलब P1 is L1, क्योंकि P1 आपको याद होगा, तो मैंने बताया था वैल्यू ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट आइस पॉइंट, P2 था वैल्यू ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट स्टीम पॉइंट, और PT था एट सम अदर टेम्परेचर. तो P1 is L1 and L1 is 25 mm. मैं mm कन्वर्ट नहीं करूंगा क्योंकि ऊपर सारा का सारा mm में है, नीचे भी mm में है, mm will cancel out. And then what is given to you is P2 180 at steam point, मतलब L2 is 180 mm. What is the temperature when the length is 60 mm? So of course you should know PT equal to LT equal to 60 mm. You are supposed to find out, क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर, और फॉर्मूला तो ऑलरेडी है, तो फॉर्मूला तो ऑलरेडी यही है. दिस इज व्हाट यू सपोज टू यूज, फॉर्मूला, एंड सॉल्यूशन इज इवन सिंपलर. व्हाई? बिकॉज यहां तो आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. 100 PT 60 P1 25 mm में है दोनों, अपॉन 180 माइनस 25 mm कैंसल, तो 60 माइनस 25 35. 180 में से 25 गया तो 155. I heard someone say 165. 155. तो ये आपको पता होना चाहिए 7 जा और ये 21 जा, 5 into है ना 31 जा. वेरी गुड, दिस इज 31 जा. गुड. So now 700 by 31. It is 700 by 31. So exact calculations, of course, you will do. I will just tell you कि कितना आएगा. देखो ऐसा है, 31 10 is 310, 20 is 620, right? 620. हमारे पास कितना है, 700, right? Correct. तो ये 23 के आसपास ऐसा कुछ आंसर आएगा, 23 24 के आसपास आंसर आएगा. तो you should do exact calculation. 700 by 31. अब what I have done is 22.5 है, तो कर लेना. इतना आया कि चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, 22.5855 whatever you are getting, 22.58 degree Celsius. Question. A resistance thermometer has resistance 95.2 at ice point. मतलब same type of question is there. Resistance at which point? Ice point. मतलब thermometric property का value P1 is R1, that is 95.2 ohm, and 138.6 at steam point. मतलब P2 is R2, which is 138.6 ohm. What resistance would be obtained if the actual temperature is 27? मतलब यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया आपको और आपको फाइंड करने के लिए बोला है PT. So you are supposed to find out what is thermometric property at temperature T. Value of thermometric property मतलब RT.
यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. तो सिंपल है. गुड. एंड ऑब्वियसली फॉर्मूला तो आपको पता ही है. यू ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला. अभी अभी हमने देखा वही फॉर्मूला यूज करना है. द सेम फॉर्मूला यू आर सपोज टू यूज. ओके देन आंसर ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू कैलकुलेशंस तो आपको करने हैं. तो दिस इज 2700 पीटी मतलब आरटी जो फाइंड करना है माइनस पी मतलब R1 विच इज 95.2 अपॉन 138.6 minus 95.2. This is 43.4. है ना. 43.4 आएगा ये. तो this is 27 equal to 100 RT minus 95.2 upon 43.4. कैलकुलेशन आप खुद करोगे. I am not going to do it for you. You are supposed to do it. तो वॉट एवर आंसर यू विल गेट, जस्ट टू टेल यू कि आप कैलकुलेशन सही कर रहे हो कि गलत, यू नीड टू अंडरस्टैंड. R1 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 95.2. स्टीम पॉइंट मतलब R2 इज 138.6. तो 0 डिग्री पे 95.2, 100 पे 138.6. हमारा टेम्परेचर कौन सा है 27, बिटवीन 0 एंड 100. तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए बिटवीन 95.2 एंड 138.6. So what we are getting is 106.92 after solving. 106.92 ohm. तो ये ट्रिक आप जेई नीट जैसे एग्जाम में भी यूज कर सकते हो. यू वांट टू नो इफ योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. तो 95.2 और 138.6 के बीच में. Very lengthy question. Example 7.5. Express T, which is 24.57 Kelvin in Celsius and Fahrenheit scale. We have been given absolute temperature 24.57 Kelvin. You are supposed to find out temperature first in degree Celsius scale and then in Fahrenheit scale. And of course, you know the basic formula. Kelvin scale is equal to Celsius scale plus 273. और दूसरा तो आपको पता ही है Fahrenheit scale minus 32 upon 180 equal to TC by 100. क्योंकि TC तो वैसे भी फाइंड करना ही है, तो we will use that TC to find out TF. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, extremely simple. Number 1, you will have TC is equal to T minus 273. So TC equal to T, which is 24.57 minus 273. अब एक काम करो, 273 में से 24.57 माइनस कर लो और माइनस साइन दे दो. तो 273 में से 24.57 माइनस कर लेना और इसको नेगेटिव साइन दे देना. तो नेगेटिव. तो हाउ मच इज दिस? माइनस 248.58 आ रहा है. माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस. नंबर 2, एक बार ये मिल गया तो दिस इज सिंपल. तो हियर व्हाट यू विल डू इज, ये जो फॉर्मूला है इसमें सिर्फ इतना ही करोगे, टीसी हटाओगे, उसकी जगह पे ये लिखोगे, दैट्स इट, डन, खत्म. फिर सॉल्व करो इसको. दिस इज 5 and 9. So take 9 there. So TF equal to 9 by 5 with negative sign, 248.58 minus 32 वहां पे जाके plus 32. तो Fahrenheit scale में पूरा सॉल्व करने के बाद I am directly telling you the answer, minus 415.44, minus 414.44 डिग्री Fahrenheit हो गया. Done. Calculate the temperature which has same value on Fahrenheit scale and Kelvin scale. So temperature which has same value on Fahrenheit scale and Kelvin scale. कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. So what you know is, first of all,
फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक हमको क्या पता है, अभी तक हमको दो फॉर्मूलास पता है, जिसमें एक फॉर्मूला कनेक्ट करता है फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस के साथ, दूसरा कनेक्ट करता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नो इज, यू नो दैट TF minus 32 upon 180 equal to TC by 100, but TC itself is T minus 273 by 100। अभी अभी लिखा था हमने यहाँ पे, if you remember, TC and TC is T minus 273, so therefore what you get is TF minus 32 by 180 equal to T minus 273 by 100। अब आपको बोला है कि at calculate the temperature which has the same value, मतलब बेसिकली सेम वैल्यू है ना इसकी टेम्परेचर की, कौन से स्केल पे, फ़ारेनहाइट पे और केल्विन पे। तो लेट TF इक्वल टू T इक्वल टू सम नेम y, आपको x बोलना तो x भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट्स द सेम थिंग। तो देयरफॉर यू हैव टू पुट y minus 32 by 180 equal to y minus 273 by 100. This is 5 this is 9, right? Then just a minute, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, that's it, and find out what is y। तो आपको सिर्फ सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करनी है, that's all you're supposed to do। तो what you will do here is cross multiply, 5 into y is 5y minus 32 into 5 is 160, 9 into y is 9y, 9y और 273 into 9, 2730 में से 273 माइनस कर लो, क्योंकि 273 into 9 मतलब 273 into 10 minus 273, how much? अरे बहुत सोचते हो, 2457, this is 2457, 2457, shift 2457 को शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, तो माइनस 160 प्लस 2457, 9y माइनस 5y, तो दिस इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है ये। अगर यहाँ पे ऐसा होता, जो नहीं है होता, तो 160 माइनस करे तो कितना होता, लेकिन हमने 3 ज्यादा गिन लिया तो 3 कम भी करना पड़ेगा, 2297, दिस इज 2297 प्लस साइन के साथ 2297 इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू 2297 बाई 4, 5 1 बचा, 1 की 2 2, 29 7, 1 7 6 4 4 2, ठीक है। बाकी अभी आप खुद देख लोगे, 576.4, माय आंसर इज 576.4.59। अभी आप देख लो एग्जैक्ट क्या आ रहा है, यू कैन चेक व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू, सो दैट्स ओके, दिस इज व्हाट यू गेट। So let us now move ahead to next theoretical topic, and which is actually the juice of this chapter। juice मतलब समझ आ रहा है ना, most important thing, right? तो बाकी तो सब you know when you make fruit juices filter कर देते हो, तो जो रह गया वो juice। So the chapter is basically mostly related to a topic called as thermal expansion। Now taking you back to first chapter of 11th standard, हमने जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था मेजरमेंट ऑफ लेंथ में व्हाट इज 1 मीटर। अब मुझे ये नहीं सुनना है 100 सेंटीमीटर, आई एम नॉट आस्किंग यू हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, आई एम आस्किंग यू कि हाउ डू यू डिसाइड कि इतने ही लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल लेट अस से दिस इज 1 मीटर स्टिक फॉर एग्जांपल। तो पहले क्या था, पहले एक स्टैंडर्ड 1 मीटर का रॉड बना के जिसको 1 मीटर बोल दिया, उसके बाद उसके डुप्लीकेट बनाए थे, पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट कर दिए, और उसके डुप्लीकेट्स जो है दे वर कॉल्ड एज 1 मीटर।
फिर उसके 1 मीटर के उन्होंने 100 डिविजन्स कर दिए, हर एक डिवीजन को बोल दिया 1 सेंटीमीटर, फाइन, दैट इज ओके। लेकिन बाद में ये जो स्टैंडर्ड रॉड था, इसका जो लेंथ 1 मीटर था, ये डेफिनेशन चेंज करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है वही रॉड, सेम रॉड, व्हेन यू टेक इट टू प्लेसेस लाइक राजस्थान डेजर्ट, it expands, and if you take the same rod to Kashmir, negative में, it contracts. So this kind of measurement cannot be globally accepted, क्योंकि ये temperature to temperature, मतलब location to location, its length will change. So the reason is thermal expansion. तो आपको पता होना चाहिए, when matter is heated, when I say matter, we are normally here concerned about solids. When matter or solid is heated, it normally expands, and when it is cooled down, it contracts. So first of all, when matter is heated, it expands, or I will write down one word here, normally. मतलब most of the materials they expand on heating. Might be there are special materials which contract on heating, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं. It normally expands, and when cooled, it contracts, shrinks basically. अब आपको ये पता होना चाहिए कि why, for what is the reason behind expansion when heated. तो first of all you need to know this, कि ऐसा expand होगा ही क्यों. तो that is why, चाहे वो ये चैप्टर हो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चाहे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हो, आई स्टार्टेड विथ टेलिंग यू व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड, हाउ एटम्स आर अरेंज्ड. और आपको मैंने ये भी बताया था कि एटम्स इनसाइड अ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, हेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लार्ज, एंड बिकॉज ऑफ दिस लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, atoms of the solid, they cannot go from one place to another, but they keep on vibrating at their own position. और ये वाइब्रेशन क्यों था? बिकॉज ऑफ द हीट. तो अगर आप इसको और हीट सप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर गिविंग इट मोर हीट, लेट अस से आई पुट अ बर्नर and I am heating this rod. Heat is a form of energy which can neither be created nor be destroyed. So what happens is this heat is taken up by these atoms, and they start vibrating faster and with more amplitude. तो पहले स्लो थे और एम्पलीट्यूड भी कम था, फास्ट और एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है. तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब दे नीड मोर स्पेस फॉर वाइब्रेशन, एंड हेंस दे एक्सपांड. सो व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, द एटम्स ऑफ द सॉलिड, they vibrate faster and with more amplitude, and hence solids expand when heated. तो ये पता होना चाहिए, when solids are heated, the atoms of the solid vibrate with more amplitude, vibrate faster and with more amplitude, vibrate faster and with more amplitude, and hence solid expands, right? So what is happening in this case? Change in temperature is causing change in dimensions, right? अब मैंने अभी तक dimensions word use किया क्योंकि maybe length will increase, length will change, maybe area will change, maybe volume will change, but in short there is change in dimensions. So the dimensions in this case, change in temperature causes change in dimensions, right? अगर टेम्परेचर कम होगा तो डायमेंशंस कम हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डायमेंशंस बढ़ेंगे. सो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड, change in temperature of solid causes change in dimensions.
change in dimensions. अब the increase in temperature will cause increase in the dimensions. This property of a solid is called as thermal expansion. This property of matter भी बोल सकते हो, solids भी बोल सकते हो, is known as thermal expansion. क्योंकि यहाँ पे expansion हुआ due to thermal energy, मतलब due to temperature. That is why it is called as thermal expansion. अब तीन चीजें हो सकती है. अगर आपके पास एक रॉड है, उसको आपने हीट कर दिया, तो there will be change in length. If you have a plate and if you heat it, then area will increase. Or if you have a cube or a metal ball, and if you heat that, its volume will increase. So thermal expansion is of three types. Thermal expansion is of three types. Number one, linear expansion. हम तीनों के तीनों डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं. नंबर टू, एरियल एक्सपांशन. और एरियल को आप सुपरफिशियल भी बोलते हो. सुपरफिशियल क्यों? क्योंकि सरफेस से रिलेटेड है. सुपरफिशियल एक्सपांशन. नंबर थ्री इज वॉल्यूम एक्सपांशन. So there are three types of thermal expansion. The one related to change in length is called as linear expansion. The other related to change in area is called as aerial expansion. And the last one related to change in volume is called as volume expansion. So we'll start with linear expansion. और बहुत easy है. As I told you कि this some chapters are so simple. तो linear expansion में सबसे पहले तो आपको linear expansion है क्या वो define करना पड़ेगा. और जब आपने ऑलरेडी थर्मल एक्सपांशन डिफाइन किया ही है ना, द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल कॉज इंक्रीज इन डायमेंशन. तो यहाँ पे बोलोगे द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल कॉज इंक्रीज इन द लेंथ, राइट? सो दिस प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज लीनियर एक्सपांशन, राइट? द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपांशन. द इंक्रीज इन लेंथ of a body like rod etc. due to increase, change मत बोल देना, change तो ठीक है लेकिन change तो डिक्रीज हो सकता है. फिर due to increase in temperature is known as linear expansion. Linear expansion. For example, let us take a rod जिसका लेंथ है L. हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ है L. So this is the rod with length L. अब हमने क्या किया? अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया. तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ विल इंक्रीज. So the change in length, let us denote it by delta L. So अब इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. बहुत सिंपल है. So consider a rod of length L. When the rod is heated, या फिर when the temperature of the rod is increased by delta T, then its length increases by delta L. So consider a rod of length L. When the temperature of the rod increases by delta T, then its length increases by delta L. अब
अब हमको ये पता करना है कि अभी हमने तो बोल दिया कि चलो टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल पहले 10 डिग्री था, अभी 15 कर दिया, तो डिग्री डेल्टा टी कितना हुआ 5। तो डेल्टा एल मतलब पहले 10 मीटर का रॉड था, अब कितना हो गया हमको ये देखना है। तो अभी बुक टू बुक लिखने का तरीका अलग है, आइडिया इज सेम। तो सम बुक्स विल से इंक्रीज इन लेंथ is directly proportional to initial length and directly proportional to change in temperature. जितना ज्यादा टेम्परेचर में इंक्रीज होगा उतना ज्यादा, मतलब डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी. So the change in length is seen to be directly proportional to initial length and change in temperature, increase in temperature. Some books will say, अब आपको पता है इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं, राइट। और अगर आपको 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर पता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो फ्रैक्शनल इंक्रीज। तो सम बुक्स विल से इट इज सीन दैट फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा खाओ या वैसा खाओ, गोज इनटू स्टमक, राइट। तो यू से डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड increase in temperature, or you say fractional increase in length is proportional to increase in temperature. सिर्फ इसको फ्रैक्शनल बोलते हैं, ये पता होना चाहिए, वो 11 के फर्स्ट चैप्टर से आता है। तो ठीक है, it is seen that fractional increase in length, fractional increase in length is directly proportional to increase in temperature, therefore delta L by L is proportional to delta T. और अभी आपको पता है जब आपको ये मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना हो तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब कंफ्यूज मत हो जाना, आप बोलोगे अरे वहां पे भी अल्फा यहाँ पे भी अल्फा। द थिंग इज 3 टाइप के एक्सपेंशंस हैं। कौन कौन से, लीनियर, एरियल, वॉल्यूम। तो हर एक में एक एक कांस्टेंट आएगा। तो लीनियर के केस में जो कांस्टेंट है ना वो अल्फा ही होता है, मतलब इट लुक्स लाइक साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, लेकिन है सेम, राइट। तो इट लुक्स लाइक सेम, बट ऐसा नहीं है कि इक्वल टू भी लिख दिया वो भी लिख दिया। दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो वेयर अल्फा, दिस वन, वेयर अल्फा, इसको थोड़ा सीधा ही कर लेता हूं मैं, otherwise you will be getting confused, where alpha is constant of proportionality, known as coefficient of linear expansion, okay. So that's what you need to know. We will continue this point onwards in the next session.